Guys are doing well, and welcome to another live stream. I'm starting these again, and I hope that exam se pehle aap logon ka inshallah we will finish the syllabus with topical past paper practice, and मेरी कोशिश यही है that you guys succeed and do very well in your exams. The plan is that we will go through the whole syllabus, and instead of giving you just bare lectures, which I already have uploaded, so you can watch those if you're interested in those, I will be using past paper topical worksheets with the lectures, तो आप लोगों को उसके साथ में ही समझ आ जाएगी. कुछ स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की फीडबैक ये थी कि उनको सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर्स जो हैं दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैम. सो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में, हिंदी में, सबको मिलाकर आई मेक अ हाइब्रिड काइंड ऑफ थिंग, ताकि अगर किसी को लर्निंग में कोई इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाए. क्योंकि मकसद हमारा ये है कि लैंग्वेज जो मर्ज़ी हो, बात समझ आनी चाहिए, आपको चीज़ें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, और आपको सबसे ज़्यादा ये कि आप लोगों को अगर आपके एकेडमिक गोल्स में केमिस्ट्री का एक अच्छा ग्रेड है तो आपका वो गोल अचीव होना चाहिए. So yeah, दुआ कीजिएगा that I'm able to fulfill this, and I'm able to help you in this journey that you all have in your academic progress. And yeah, let's get started. The topic that we have today, it is atoms and isotopes. It's a really basic topic for A levels and AS, and there is some prior knowledge. कुछ चीज़ें जो आपको पहले से आनी चाहिए. जैसे I'll tell you, this is kind of like a basic test that you have for yourself. Think about it. Do you know what atomic number means? अगर आपको atomic number का पता है कि वो क्या होता है, you're good. What is atomic number? I'll tell you. Atomic number is the number of protons. So atomic number, that's the first thing you need to know. And not just कि वो क्या होता है, you also need to know कि atomic number ही वो चीज़ है जिसकी बेस पे हम elements को identify करते हैं. So all the pure substances that we have, they are all made of elements, and there is around 92 naturally occurring elements, और उनको आप periodic table में देख सकते हो, and the ones that are beyond 92, जिनका proton number या जिनका atomic number उससे ज़्यादा है, they are already man-made. So we have a long list of those that we have made. Second thing that you should know from O levels, IGCSE और MYP, जो भी आपने पढ़ा है. Second thing you need to know is कि subatomic particles क्या होते हैं. So you need to know that subatomic particles are the three main particles that are inside the atom. Those are protons, which I'll show as P positive, neutrons N0, and E negative. P positive का मतलब है proton is positive one charge compared to the rest of them, and electron has a negative one charge, which means the charges on both of them are this one and this one. The charges are exactly equal in value, लेकिन इनका mass different होता है. So mass अगर हम इनको देखें, and that's called relative mass. Mass is 1, 1 and 0. 0 means negligible. हम उसको ignore करते हैं. That's the next thing you need to know about. That charges and relative masses. These are again relative, मतलब compared to each other. ठीक है, ये उसकी actual value नहीं होती है. Third thing is the term that you need to know, isotopes क्या होते हैं. And isotopes, again, from O levels, IGCSE, MIP, you know that isotopes are atoms of same element. यानी उनका प्रोटॉन नंबर सेम है, बट दे आर डिफरेंट masses. उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करता है, उनका प्रोटॉन फिक्स रहता है, लेकिन ये चेंज होता जाता है. एंड बिकॉज वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वो आइसोटोप्स बन जाते हैं. रिमेंबर, अगर किसी भी चीज़ का प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाए तो उसका एलिमेंट चेंज हो जाएगा. अगर न्यूट्रॉन चेंज हो जाए और बाकी को चेंज ना हो तो उसका आइसोटोप चेंज हो जाएगा. और अगर इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाए और बाकी को चेंज ना हो तो वो आयन डिफरेंट बन जाएगा. सो इन तीन की ये सिग्निफिकेंस है. सो दैट्स समथिंग यू शुड नो अबाउट. फोर्थ थिंग दैट यू शुड नो इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज अगेन, आपको पता है शेल्स होते हैं, एंड दो शेल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देम, एंड वी विल स्टडी के उनमें शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं. बट राइट नाउ यू नीड टू नो द कॉन्फ़िगरेशन जो O levels या IGCSE वाली थी. कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा, I need the configuration of phosphorus. So you'll just look in the periodic table and you'll be like, okay, phosphorus has 15 protons and 31 is the relative atomic mass. Remember, this is the relative atomic mass. So 15 protons हैं तो 15 electrons हैं. क्यों? क्योंकि atoms are neutral. Atoms have equal number of electrons, equal number of protons. Protons are positive, electrons are negative, charges cancel out. So हमारे पास ये 15 है. So 2, 8, 5. This is the configuration that you should know again from O levels IGCSE. And
last thing is that can you make a new isotope for this same thing? Of course. Just change the number of protons. Sorry, my bad. Change the number of neutrons. And उसका मतलब है उसका mass change कर दें. So आप इसका mass 33 कर दोगे तो ये एक और isotope बन गया. आप इसका mass 29 कर दोगे तो ये और isotope बन गया. But try not to change this number a lot. उसी range में आए 1, 2 का फर्क. That's fine. ठीक है? That will be okay. Alright. So moving on. The next thing that we have is let's get started with the basic thing that we have. So सबसे पहली चीज़ ये कि थोड़ा सा background, we know that there are elements, 92 elements हैं, and interestingly they're all made in stars. Some of them, obviously hydrogen is before stars, लेकिन everything else has to be made in stars or star factories, यानी कि supernovas. That is where stars are made. So they explode and they create really, really big explosions with lots of energy which fuses these atoms together to make bigger and bigger atoms. तो अगर आपने हीलियम बनाना है तो आपको हाइड्रोजन को फ्यूज़ करना पड़ेगा और इससे हीलियम बनेगा. और अगर आपने लिथियम बनाना है तो हीलियम और हाइड्रोजन को फ्यूज़ करना पड़ेगा, या 3 हाइड्रोजन को फ्यूज़ करेंगे तो लिथियम बन जाएगा. इसी तरह बाकी सब भी बनते जाते हैं. दुनिया में 92 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हर चीज़ के, ऑल द मैटर दैट वी हैव, एंड उससे हमारे पास हर चीज़ बनती है. एवरीथिंग. वो क्या कहते हैं कि डोंट ट्रस्ट एन एटम, दे मेक एवरीथिंग अप. So that's what they are. And these atoms, they have subatomic particles, और वो subatomic particles, there's like a zoo of those particles. हम सिर्फ 3 के साथ डील करेंगे, protons, neutrons and electrons. हमारा सन जो है उसमें मेनली हाइड्रोजन है, न्यूक्लियर फिशन होती है, हीलियम बन जाएगी, इवेंचुअली ऑक्सीजन तक शायद वो जाएगा, उससे ज़्यादा उसके पास एनर्जी नहीं है. जो बड़े स्टार्स होते हैं उससे भी बड़े बनाते हैं. And this is a very fascinating thing, and I would urge you to explore that. But again, in this live stream and the session that we have for the next 3 months, we will focus more on exam. So इस वजह से I will not go into a lot of detail. One thing that I would like you to know about is कि not all atoms are created equally. कुछ atoms ज़्यादा होते हैं, कुछ atoms कम होते हैं. दुनिया में तमाम elements की abundance different है, और उन elements के अंदर भी they have different abundance of the isotopes. यानी कि अगर मैं क्लोरीन की एग्जांपल लेता हूँ, it's a very common example. Chlorine has 2 isotopes, chlorine 35, chlorine 37. What that means is that they both are chlorine, they both have 17 protons. But इसमें 35 mass है, इसमें 37 mass है, which means this has 18 neutrons. How did I know that? I have 17 as a proton number, subtract the 2 to find neutrons. So इसमें 20 neutrons हैं, इसमें 18 neutrons हैं. Now turns out if you go out in the world, you will find that on average 75% of all the atoms of chlorine are this one, and 25% of all the atoms of chlorine, stable isotopes, they are this one. Unstable isotopes और हो सकते हैं, which will break down, which will make like they will not sustain themselves for a long time, radioactivity करेंगे. We are not concerned with those at the moment. So stable में ये होता है. तो ये हमारी होगी abundance. Now this abundance is useful when we're trying to find out average. Average किस तरह से होती है? Imagine आप एक एग्जाम दे रहे हो और उस एग्जाम में there's 3 papers. There's paper 1, let's call them paper A, B and C. Okay, so theory, MCQs, practical, 3 एग्जाम पेपर्स हैं. Let's suppose इसकी वेटेज है 40%, इसकी वेटेज है 50% और इसकी वेटेज है 10%. ये इनकी वेटेज है. अच्छा, now there's a student who scores, उसका स्कोर आता है, he scores 90% in this one and 100% in this one, but they flunk this one, और इसमें उनके सिर्फ 10% मार्क्स आते हैं. So the question is, what is students' overall grade? How do we figure that out? All we will do is we will multiply this with this, this with this, this with this, and then add everything up. And if you do that, that is called weighted average, because you're considering the weightage when you're calculating the average. So you're not dividing by 3 now, you're dividing by the total weight. So this is 100%. So that's why we'll get this times this, which is around 36%, I think, or I don't know. And this one is 50%, and this one is just 1%. So overall, this student gets 87%. This is the student's overall grade, despite scoring so good in these both exams. ये तो उसने कमाल कर दिया ना, but yet this score
reduce their overall score to just 87%. So this is weighted average. इससे हमें दो बातें पता लगती हैं. एक ये कि weighted average क्या होती है, but दूसरा ये कि all papers are important. You have 5 exams in A-levels chemistry. You have 3 exams in AS chemistry. Don't take any of them lightly. Spend time on each one of them. I know that students say कि अच्छा पेपर 3 तो आसान है, I'll just practice in the end और हो जाएगा, और पेपर 5 तो बस रटा है और मैं उसको बाद में देख लूँगा या देख लूँगी और वो हो जाएगा. Please don't put things off. Start now. If you haven't, start now. If you have already started, good for you. Keep that pace going. ठीक है? Okay, so the question is that do you have an online batch for AS level? No, not right now. I'm just going to do this session and we will see for November in summer if I do. But abhi ke liye we're just going to go with this session. I wanted to make sure कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ लें. उसकी एक मेजर वजह ये थी कि when I announced the session, majority of the students who I talked to, they were like, they had affordability issues. And I understand that everybody is going through a financial crisis. So why not just do YouTube? It helps everyone. Okay, so moving on. We know, I will not go into the detail of कि atoms किससे बने होते हैं, atoms के masses क्या होते हैं. You can just look all of that. आपको एग्जाम में भी डेटा बुकलेट, अब तो नहीं एग्जाम में देते, बट डेटा बुकलेट आपके पास है. इट लिस्ट द mass of protons, electrons, neutrons, and you can see that electrons are much lighter, protons are much heavier. ठीक है, and neutrons are roughly the same as proton, but they are neutral. They don't have any charge. Okay, size of atom is really, really small, but atom is mostly empty. ज़्यादातर लोगों के दिमाग की तरह वो खाली है. And there is a very small piece of it, which is nucleus, which is like really, really small, but very, very dense. तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने एक पीस ऑफ गोल्ड फॉइल लिया, बहुत पतला सा पीस, मतलब आप समझ लो कि ओनली अ फ्यू एटम्स थिक. तो उसने उसको हैमर कर करके उसको इतनी फ्लैट लेयर बना दी. उसके बाद उसने क्या किया, उसके पास एक गन थी, उस गन से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं. ठीक है, एंड दैट इज़ बेसिकली अ रेडियो एक्टिव सोर्स. सो इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे. अल्फा पार्टिकल्स के बारे में उसको ये पता था दैट दे आर पॉजिटिव. उसको सिर्फ ये पता था पॉजिटिव होते हैं और बड़ी तेज़ी से जाएंगे वो. ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंड. दे आर अल्फा पार्टिकल्स गोइंग डायरेक्टली एट दिस थिंग. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू आर शूटिंग समथिंग ऑन अ वॉल. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? रुक जाएगी, यही एक्सपेक्ट करेंगे आप. या अगर आपको ये बताया जाए कि नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इन देयर, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा फिर निकल जाएगी, खाली आगे चली जाएगी. एट दैट टाइम दे थॉट कि अच्छा एटम जो है ना सारे का सारा पॉजिटिव होता है और उसमें थोड़े थोड़े पीसेस नेगेटिव के कहीं होते होंगे, और उसको वो जैसे चॉकलेट चिप कुकी होती है ना, इमेजिन दैट कि चॉकलेट चिप कुकी में जो डो है आपके पास, दैट इज पॉजिटिव, एंड द चॉकलेट चिप्स दैट यू हैव ओवर देयर, दे आर नेगेटिव. दैट वाज देयर आइडिया. दे कॉल्ड इट प्लम पुडिंग. सो उसने कहा कि अच्छा आई विल पुट अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल ऑन दैट, जो नेगेटिव होगा उसके साथ स्टिक करेगा, जो पॉजिटिव होगा उससे वो रिपेल हो जाएगा. दैट वाज हिज आइडिया. But the results surprised him. Here's what happened. हुआ क्या? Most of it went straight. And he was like, ये क्या हुआ? Why is it going straight? Straight जाने का मतलब क्या है? Straight जाने का मतलब ये है that atom is mostly empty. That's what it means. Then some of them went like this. They deflected. Positive चीज deflect क्यों होगी? क्योंकि there's something else that is positive that's deflecting it. That's the only reason. और कोई वजह नहीं है कि positive चीज reflect हो. So this shows that there is a positive part inside the atom. And thirdly, they noticed that a very small part were reflected at steep angles. बहुत जोर से उनको रिफ्लेक्शन हुई, वो वापस चले गए. दैट मीन्स कि वो डायरेक्टली उस पॉजिटिव चीज़ पे हिट कर रहे हैं, बट वो बहुत थोड़ा नंबर है. इट्स लाइक लाखों में से सिर्फ कुछ सैकड़ों, अराउंड 200 आउट ऑफ whatever number he tried a big number, 190,000 or something. So this shows that the positive part is dense and small. ये 3 ऑब्जर्वेशन हैं और उनके 3 कंक्लूजन हैं. एंड दिस इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. हमें इससे एटम का स्ट्रक्चर नजर आता है.
हमें नज़र आ रहा है कि वो अगर डायरेक्ट जा रहा है तो इसका मतलब है वो खाली होगा, और ज़्यादातर डायरेक्ट जा रहे हैं. कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है देयर इज अ पॉजिटिव पार्ट इन देयर. एंड कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो जो बहुत थोड़े से पीसेज है ना, तो इसका मतलब है वो चीज़ बहुत छोटी है लेकिन वो बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. दैट इज़ वाई इट्स डिफ्लेक्टिंग देम विद सच स्ट्रॉन्ग फोर्स, such strong repulsion. So this is the reason that we now know the structure of atom the way we do. There's a nucleus in the center, all of it is empty, and then there's electrons moving around. The electrons move around in weird shapes and like unka pathway bahut different hota hai, but we call those levels of energy that they have as shells. They have different pathways, और pathways को हम देखेंगे, we call them orbitals, and that's where they are. बट एग्जैक्टली पाथवे को मैप नहीं करते हम, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो किस तरह घूमता है. मतलब हमें पता है बट देर आर सम रूल्स अबाउट इट दैट वी डोंट नीड टू गो इनटू. सो दैट्स द आइडिया. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी कैन ऑल्सो relate it to something else that we know. If I have a positive plate and I have a negative plate and I throw something that is neutral, if I throw that, it will go straight through. That shows it is neutral. If something comes and bends like this, that shows that that thing is negative क्योंकि वो उस तरह से deflect हो रही है. In fact, when you throw electrons, they bend a lot. इससे हमें क्या पता चल रहा है? It is negative, and second, it is very small, very light. That is why it's bending a lot. Same force उस पर apply हो रही है लेकिन वो बहुत तेज़ी से जा रहा है. अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है. यहाँ पे उसी चार्ज के ऊपर वही सेम फोर्स लग रही है जो कि दूसरे चार्ज पे अगर लगे, अगर पॉजिटिव वाले पे लगे तो वो थोड़ा सा ऐसे जाता है. दैट शोज कि फोर्स उतनी है लेकिन उसको वो उतना से बेंड नहीं कर रही क्योंकि उसके ऊपर मैस उसका जो है वो बहुत हैवी है. सो दैट्स शोइंग because it's going down, that shows it is positive because it attracts negative, and this one is negative because it attracts positive, and that's how we know कि electron negative है. किसी ने उठ के बोल नहीं दिया था कि electron negative है तो बस मान लो मेरी बात. There is always evidence, and evidence के बगैर कोई बात नहीं माननी. ठीक है? Okay. So moving on, हमारे पास फिर अगले particles होते हैं ions, and ions can be positive or negative. Positive ions को cations बोलते हैं, negative ions को anions बोलते हैं, and they basically are the ones जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है. वी डोंट से प्रोटॉन्स का नंबर चेंज होता है, वी से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फ्लक्चुएट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट एंड डिफरेंट चार्जेस. दैट इज आयंस. लेट्स ट्राई टू टेक एन एग्जांपल. लेट्स से मेरे पास ये एग्जांपल है. आई हैव लेट्स से या सल्फर 2 नेगेटिव मेरे पास है and 1632. That is the number. So first of all, what do these numbers tell me? Protons, mass, charge. और यहाँ पे दो relations हमें पता होनी चाहिए. Protons minus charge will give me electrons. So electrons are protons minus charge. So this one has 16 protons minus 2. That means 18 electrons. That's the number of electrons this one has. This one is the number of protons. And neutrons और mass minus protons, या जिसको हम a minus z भी बोलते हैं, because z is considered number of protons, a is the mass. So 32 minus 16, इस वाले में 16 proton है, neutron है, my bad. ठीक है? So that is how we know this. Okay, so I think that is clear. If you have any questions, please do ask. Okay, so moving on, we know that this is how they are, and this is the kind of atoms and ions that they make, and that I think everybody is able to work with. Now let's move on. How do you find relative atomic mass? So first of all, the relative atomic mass की definition आपको आनी चाहिए. Now one note about all definitions in A levels. Go to your syllabus. The best definitions will be in your syllabus. So examiner ने वहाँ पे clearly define किया हुआ है कि definition क्या होनी चाहिए. So relative atomic mass में your syllabus says that it is the weighted average mass. It is the weighted average mass of naturally occurring isotopes. All of this will carry 1 mark. And then compared with, relative to 1/12 of carbon 12 isotope. And this will carry 1 more mark.
This is what we compare with. This is our unit, and this is the value. So overall, we get that. This is the relative atomic mass. अच्छा, अब relative atomic mass को AR बोलते हैं. Now this same definition will change depending on what particle you have. अगर मेरे पास ion आ जाता है, तो I will simply change this. ठीक है, I'll say weighted average mass of the ion compared with 1/12 of carbon 12. मेरा molecular mass आ जाता है. I'll say weighted average mass of the molecule compared with carbon 12. मेरे पास कोई और isotope आ जाता है. I'll say weighted average mass of the isotope compared with carbon 12. That is the definition. Now the word naturally occurring simply means there are some that are unnatural, some that are unstable. वो stable नहीं रहते, वो destroy हो जाते हैं, and that is the reality of that. Let's do an example. Let's say मेरे पास magnesium के 3 isotopes हैं. So there is magnesium with 3 isotopes, 24, 25, 26, and the relative abundance of this one is 78.7, this one is 10.13, and this one is 11.17. So what we'll do is we'll multiply the mass with this, and that will be added. So this plus this plus this, and once you do that, you'll get the relative atomic mass. Why? It is just like वो जो exam में weightage की हमने definition देखी थी या example देखी थी. So 24 times 78.7, this is percentage, so divide by 100. Now you can divide the whole thing by 100 if you want, or you can just divide each one individually. And it's important that you show these working to the examiners. Let's see what do we get. So we will get so I'm getting 24.32 as my relative atomic mass. Do not write more decimal places than what they've given you. So अगर उन्होंने 1 decimal place लिखा है तो आप भी 1 decimal place लिखेंगे. अगर उसने ज़्यादा लिखी है तो आप ज़्यादा लिखेंगे. ठीक है. अच्छा, एक तो ये definition होती है. They give you the isotopes, they give you the abundance, and they ask you what is the relative atomic mass. अच्छा, there is another kind of question that examiner gives. Examiner will give you the relative atomic mass, and examiner will ask to find the abundance. तो दो तरह के questions होते हैं. एक, they give you all the information, they ask you for relative atomic mass, we've done that. एक में they will give you the relative atomic mass and ask the percentage or ask the isotope. So उसमें हमने ये ज़हन में रखना है that the percentage of all of this has to be 100, because percentage is 100, total is 100. So अगर आपको वो इसकी दे देता और इसकी वैल्यू दे देता और ये ना बताता, you can simply subtract it from 100, both of these, and you will get the value. And third, अगर आपको एक की पता है और एक की नहीं पता, just call it X and use that in the rest of the calculations. So I'll give you one example of that. Let's say we have potassium. Potassium has potassium 39, potassium 41, and they say that relative atomic mass is 39.1, and that's all. They don't tell us the percentage. So what do? We will assume that this one is X%, and the total is 100, right? So this one will be 100 minus X%, right? And now we'll just multiply them, add them, and that should equal this. That's it. That's the technique that we have. So once you do that, so 39 times X% plus 41 times 100 minus X% equals 39.1. And now you have algebra to do. So this will become 39x, this will become 4100 minus 41x all over 100 equals 39.1. You'll multiply this here, you'll get 39 minus 41 is minus 2x plus 4100 is equal to 3910. So minus 2x is equal to 3910 minus 4100 minus 190, and x will come out to be minus 190 or minus 2, which is 95%, I think. Let's confirm. Yep, 95%. So that's your answer. That is how we know that ये 95%. So the other one will be 5%. Straightforward. Okay, now I'm going to give you a
question. You have copper 63 and copper 65, and the AR is 63.5. Go on, take a minute, do it, and after a minute, I'll teach you a shortcut to doing this. Okay, so the standard method is you simply assume this is X%, this is 100 minus X%, and you do the calculation. So 63X plus 65 into 100 minus X over 100 equal to 63.5. So this will give us this, and then minus 2x is equal to 6350 minus 6500. So that will be minus 150 minus 2x. X will come out to be 75%. And if this is 75%, the other is 25%. But let me tell you another way to do this. Just put it on the number line. And this method works if you have as many isotopes as you want, but I will just deal with two examples. Just the example with two isotopes. We have 63 here. We have 65 here. Okay. So the ratio is, the final answer is 63.5. Now here's the thing. Find the distance of this one from here and the distance from this one from here. So this is 0.5. This is 1.5. The ratio will come out to be 1:3. What this means is, just flip the ratios and you will see, say 63 वाला जो है उसकी ratio 3 है और 65 वाले की ratio 1 है. And what is that in 100%? Percentage में वो कैसे होगी? This is 75%, that is 25%. That's how you do it. Just divide 100 by 4, and so that is 25, that is 75%. And this method works every single time because this is weighted average. This is how you calculate weighted averages. So this is a graphical way of doing this. Examiner will accept it if you show and you illustrate कि आप क्या कर रहे हो. But this is very good in case you want to do MCQs, क्योंकि उसमें आपको कोई calculations, algebra कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. Just do this and you're good. Let me give you another example. Let's suppose हमारे पास कोई random atom है X, और X का एक आइसोटोप है 62 और X का एक आइसोटोप है 68, लेकिन हमारे पास जो इसका relative atomic mass आता है वो आ जाता है 64.5. So 64.5 is not a very good number, थोड़ा ugly number है. Let's call it 63.5. Maybe that will work. Now, number line लें. This is 62, this is 68, the number is 63.5. So distance from here to here is 1.5 and the distance from here to here is 4.5. Yeah, 4.5. So the ratio comes out to be 1:3. Oh, वापस वही बन गई. So 3 इसकी, 1 इसकी. Flip करना है आपने. Ratio flip every single time. याद है हम formulas में ratio flip करते थे. So जब आप ions के formulas बनाते थे, so just like that. Ratio flip करो, वापस 75% ये, 25% ये. कैसे? Total 100 होने चाहिए. So just do 3 parts of 100 and 1 part of 100 and add them. So total 4 parts of 100. And that's how you get it. And वापस वही numbers आ गए हैं, but the method works. I mean, this was just an thing कि वही numbers वापस आ गए. Okay. So how do we actually calculate it? I mean, हर दफ़ा बैठ के scientists calculate तो नहीं करते. And secondly, how do they know कि percentage क्या है? उसके लिए they have a machine that's called mass spectrometer. I've only used it once when I was in LUMS. मैं वहाँ पे जब मैं engineering कर रहा था तो हमें chemistry department में वो होती थी और बड़ी सी machine है and it's fun to use. So if you are planning on going to a good university, you will definitely get to use it if you study sciences. Otherwise, आपके just request the chemistry department to help you or physics department. Okay, so what does it do? Mass spectrometer की एक limitation है. It only works with charged particles because what it does is it charged particles को वो घुमाती है, उसको collect करती है based on how much they bend in a magnetic field. And I will not go into the detail of why things bend in the magnetic field if they're charged. But simple सी बात है, अगर कोई charged particle होगा, it's a reality of nature that magnetic field उसको affect करता है and उसकी वजह से उसको वो accelerate करता है और उसकी वजह से उसका path different हो जाता है. That's it. It's a reality of nature. But
न्यूट्रल पार्टिकल्स को वो नहीं करता ऐसे. रीज़न, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा. So that's why we need charged particles, and the way to do that, easiest particles to charge are to make them positive ions. हम उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करते हैं और वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं. सो मास स्पेक्ट्रोमीटर पॉजिटिव आयंस बनाता है, कोई भी चीज़ है ना उसके पॉजिटिव आयंस बना देगा. ठीक है. नाउ इन आयंस का मतलब ये नहीं है कि ये वही पॉजिटिव आयंस होंगे जो हम नेचुरली देखते हैं कि सोडियम का पॉजिटिव 1 होगा और आयरन का पॉजिटिव 2 या पॉजिटिव 3. नो, आप किसी भी चीज़ के आयंस बना सकते हो. सो मैं HCl का भी आयन बना सकता हूँ. HCl with positive 1 charge, HCl with positive 2 charge. हमने इलेक्ट्रॉन ही नॉक ऑफ करने हैं ना, कर सकते हैं. सो सोडियम का पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, जितना मर्जी चार्ज बना लो. ठीक है. ऑफ कोर्स अप टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट हैज़. अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप पॉजिटिव 11 से ऊपर तो नहीं जा सकते बिकॉज यू रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. एंड वी विल स्टडी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में एनर्जी कितनी लगती है और कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है. या सो दैट्स द थिंग. अब हम ये कर सकते थे कि हम उसको नेगेटिव चार्ज बनाते और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते, लेकिन फॉर सम रीज़न, एंड आई मीन रीजंस आर रियली सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि एनर्जी कम लगती है इलेक्ट्रॉन लूज करने में यहाँ पे. सो दे डू नॉट क्रिएट नेगेटिव आयंस. सो दुनिया में सारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. सो आपने ज़हन में रखना है कि जब भी मैस स्पेक्ट्रोमीटर का रिजल्ट आएगा इट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव आयंस. कोई न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होगा. कोई ये नहीं होगा कि जी HCl का रिजल्ट आया, नहीं, HCl पॉजिटिव का रिजल्ट आया होगा. ठीक है. अच्छा, यूजली हम +1 के साथ ही लेते हैं जितने भी आपको ग्राफ्स मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं ग्राफ. दैट्स फाइन अगर आपको मिलते हैं. और दिस गिव्स यू व्हाट वी कॉल मैस स्पेक्ट्रम. आपको मैस स्पेक्ट्रम पढ़ना आना चाहिए. दैट इज़ द की. आपको मैस स्पेक्ट्रम पढ़ना आना चाहिए. आपको ग्राफ मिल गया ना, आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ मैंने करना क्या. सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल. आई हैव दिस वेरी सिंपल मैस स्पेक्ट्रम, और इसमें क्या है कि मेरे पास x एक्सिस में मैस टू चार्ज रेशियो, एंड इफ द चार्ज इज 1, सो ये बन जाएगी m/1. तो m ही हुई ना. तो अगर वैल्यू यहाँ पे आती है लेट्स सपोज 64, 66 और 68, तो दैट सिंपली मीन्स कि अगर +1 चार्ज है तो ये 68/1 है. लेकिन अगर +2 चार्ज है तो ये 68 इज एक्चुअली एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय 2. सो फिर एक्चुअल मास क्या होगा? अगर +2 चार्ज हुआ तो एक्चुअल मास विल बी डबल ऑफ दिस. सो 68 का डबल क्या होता है? 136. सो उसका एक्चुअल मास फिर 136 होगा. ठीक है. लेकिन हमें यूजुअली वो जो एग्जाम में देता है ना, वो सारे के सारे +1 ही होते हैं. तो जो उसका वैल्यू आ रही है वही उसका मास होती है. आयन का मास, एटम का नहीं, आयन का मास. ओके. अब वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ आइसोटोप्स हैं और उन आइसोटोप्स के मासेस या वैल्यूज वो दे देता है. इसका ग्राफ आता है वो 100 पे जा रहा है, इसका ग्राफ आ रहा है वो 80 पे जा रहा है, और इसका ग्राफ आ रहा है वो 60 पे जा रहा है. तो दिस y axis can be your ratio, can be your percentage, can be your relative abundance, anything. So यहाँ पे हमें कुछ भी उसने दे दिया ना, तो हमने देखना है कि अच्छा इसका वेट है 100, इसका है 80, इसका है 60. So let's calculate the relative atomic mass. Again, the weight is given, the value is given, just multiply them and divide by total weight. जैसे हम 100% में करते थे ना, बिकॉज वो परसेंटेज थी तो 100 टोटल था. हेयर विल डिवाइड बाय टोटल वेट. सो टोटल वेट है 100 + 80 + 60, एंड दैट्स द वेटेड एवरेज. ईच वन ऑफ दीज लाइन्स इज कॉल्ड पीक. सो these are 3 peaks, and these peaks correspond to different isotopes of whatever thing you're working with, और उसके हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे. तो आप सोचो अगर आपके पास क्लोरीन है तो उसके मास स्पेक्ट्रम क्या होगा? ट्राई टू मेक इट. आपके पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं. ठीक है. क्लोरीन 35 विच इज 75% एंड क्लोरीन 37 विच इज 25%. ट्राई टू स्केच उसका मास स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा. गो ऑन, डू इट. So if you have drawn it correctly, so it will be mass to charge ratio here, percentage here, and you will have one value at 35, one value at 37, क्योंकि 2 isotopes हैं आपके पास. This peak will have a weightage of 75, and this peak will have a weightage of 25. So आप देख सकते हो कि total weight 25 + 75 100 होगा. So this is how you get different values.
and different spectrum, और उन spectrum को आप read कर सकते हो. Later on, you will also study spectrum of molecules. लेकिन अभी के लिए I'm just sticking with atoms because that's simple. And that sums up this whole chapter. So that is what there is. And we took only what? How long did we take? Oh wow, just 40 minutes. So yeah, we are done with this chapter. Now the next thing is to do past paper questions. And I have been blessed कि मेरे colleagues जो हैं वो बहुत helpful हैं. And one of those जो मेरे teacher भी हैं, मेरे mentor भी हैं, और who has helped me a lot and a very inspiring person for me, Sir Bilal Hamid. And I look forward to meeting him again. और मैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. और अगर मुझे केमिस्ट्री से मोहब्बत हुई है तो दो लोगों की वजह से हुई है. वो एक सर अली हैं और एक सर बिलाल अमीन है. क्योंकि जिस पैशन से, जितनी मेहनत से ये लोग पढ़ाते हैं, दे आर लाइक, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड एंड रियली रियली इंस्पायर्ड बाय दीज टू पीपल. एंड दे आर जस्ट लाइक as great as teachers come, like they're right there at the top. So Sir Bilal Hamid की worksheets, I will be using them, and I'm really grateful कि उन्होंने वो provide किए. And अगर Sir Bilal Hamid सुन रहे हैं, and if you don't like it, sure मुझे बता दीजिएगा, I will not use them. But thank you for those, and thank you for all the work that you do. So I will be using those worksheets, and I will be taking past paper questions. उनके अलावा भी कुछ past paper questions होंगे, and I will be explaining those in this session. So let's take a 2 minutes break. We'll come back and then we'll do past paper questions. All right, so let's get started with the atoms and isotopes worksheet. So there's many questions here, so I think this will take a little longer. Yeah. FIC I am doing past papers as well as lectures, so we'll take very short lectures, but ज़्यादातर हम past papers पे focus करेंगे. And I'll make sure कि अगर कोई भी concept होगा उनमें बताने वाला, I'll explain the questions, so आपको साथ साथ में आ जाएगा. And of course, you're more than welcome to ask questions, and I really I mean, it's a delightful thing for me अगर आप सवाल पूछेंगे and you engage. So keep doing that. Yeah. Okay, so let's start with this one. हर क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. एक ये कि आप उसको प्रॉपर लंबे तरीके से करें और वो क्वेश्चन हो जाएगा, बट एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता. सो यू नीड शॉर्टकट्स, यू नीड क्विक थिंकिंग, एक्सक्यूज मी. सो यू नीड टू फाइंड अ वे कि आप उस क्वेश्चन को फॉरन जीरो इन ऑन द करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. विच स्पीशीज कंटेन्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप देखोगे कि केमिस्ट्री में वो वर्ड स्पीशीज यूज करेगा. ये वो ओ लेवल्स IGCSE MYP में यूज नहीं करता था. दे स्टार्ट टू डू दिस इन A levels बिकॉज एवरी particle can be considered a species. ठीक है, so instead of saying particle हम species का word use करते हैं. So which species contains the smallest number of electrons? Okay, so let's see. Smallest number of electrons कहाँ से आता है? Electrons is protons minus charge. ठीक है, so smallest number of electrons. So let's see. Boron is 5 minus 3, 2 electrons. Beryllium is 4. मैं proton number periodic table से देख रहा हूँ. So 4 minus 2 is 2. Hydrogen is 1 minus 1, so that's again 2. So that leaves you with helium, which is 2 minus 1, which is the correct answer. Okay, question number 2. When nuclear reactions take place, the elements produced are different from the elements that reacted. Nuclear equations, such as the one below, are used to represent the changes. What's happening here is that you have uranium atom, you have bombarded it with neutron, जो उसको break down करता है, barium और krypton बनाता है, और 3 new neutrons बनते हैं. And this is a chain reaction because it creates more neutrons. Physics में आप nuclear physics में इसको पढ़ते हो. The nucleon number total is constant at 236. So 235 इसका, 1 इसका, mass same रहना चाहिए. So इनको भी add करके उतना ही mass आना चाहिए. And proton number total is constant at 92. So ये 92 है, तो ये दोनों add होके 92 ही होने चाहिए. In another reaction that is the case, वो पूछ रहा है कि बताएं जी J क्या है. So let's see. प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए. सो 238 प्लस 2, 240 टोटल मास है ऑन द लेफ्ट साइड, और 2 न्यूट्रॉन ये हो गए, तो 238 मास इधर आ गया. ठीक है, सो इसका मतलब है आंसर इज गोइंग टू बी A और B. इन दोनों में से आंसर होगा, बाकी इग्नोर कर लिया हमने. देन द प्रोटॉन नंबर शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट. सो 92 प्रोटॉन्स हियर, 1 प्रोटॉन, 93 प्रोटॉन्स ऑन द लेफ्ट साइड. ऑन द राइट साइड यहाँ पे तो कोई प्रोटॉन नहीं है, सो 93 प्रोटॉन्स है. सो जस्ट गो इन द पीरियोडिक टेबल and see can 93 protons किसके हैं. Just give me a minute, let me open the periodic table. Yeah, so
Yeah, this is Neptunium, so our answer will be that it is Neptunium. That is the one, that is the answer. And again, thank you to Sir Bilal Hamid for providing these worksheets, and they're like the best worksheets that I've seen so far. Really, really extensive and detailed. So yeah. In which pair do the atoms contain the same number of neutrons? Again, number of neutrons क्या होते हैं? Mass minus protons. That's what number of neutrons are. So 11 minus 5, that is 6. 12 minus 6 is 6. ये तो हमारा पहला ही आंसर ठीक हो गया. And there you go. Mass spectrum is given to us. अभी हमने देखा mass spectrum को कैसे study करते हैं. So yeah, let's see how to do this one. Which chart is a correct mass spectrum that would lead to this value? Value क्या है? 63.5. अब मैंने आपको क्या बताया था? 63.5 has to be in the ratio of the distance from both of these. तो हमारे पास कौन सा होगा ऐसा? We have done this example by the way. अभी हमने ये एक एज एन एग्जाम्पल भी मैंने आपसे कराया, तो आंसर तो इसका सी है. बट हाउ डू वी डू दिस इन द एग्जाम? जस्ट लुक एट द रेशियोज. आपके पास वैल्यू है 63.5. वैल्यू इज मोर टुवर्ड्स दिस साइड एंड लेस टुवर्ड्स दिस साइड. ठीक है. सो इनमें क्या होगा? इनमें ज़्यादा वैल्यू इस तरफ होगी बिकॉज उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो इट विल पुल द वैल्यू टुवर्ड्स इटसेल्फ. 63.5 हो क्यों नहीं सकती? 100% इसकी इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज नो आइसोटोप कैन हैव अ डेसिमल वैल्यू. कोई हाफ न्यूट्रॉन हाफ प्रोटॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. ठीक है. क्वांटम इंटेंगलमेंट एक चीज़ होती है, आप क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हो, जिसकी वजह से ऐसा होता है. बट अगेन वी डोंट गो इन टू द डिटेल ऑफ दैट. वी जस्ट नो कि हाफ अ प्रोटॉन हाफ अ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो इन दोनों के मिडल में रहेगा. इनफैक्ट वो इस तरफ को पुल होगा क्योंकि ये 22% ज़्यादा है, 12% कम है, तो इस तरफ को पुल करेगा वो उसको. ठीक है. तो हमेशा आपने ये देखना है जिधर परसेंटेज ज़्यादा ना उस तरफ को वैल्यू पुल होती है. सो आप इनको कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस वैल्यू को मैंने कैलकुलेट करना है. डोंट कैलकुलेट ऑल ऑफ देम. लर्न टू रिजेक्ट द रॉन्ग वैल्यूज बाय लुकिंग एट देम. न्यूट्रॉन्स आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड. कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं, उसने इंटरेक्ट ही नहीं करना. The mass of one neutron is relative to this is this and any deflection is recorded. Okay. Mass of neutron 1 होता है, तो या B होगा या D होगा, and deflect उसने होना ही नहीं है, तो D is the answer. Drinking water may contain dissolved calcium hydrogen carbonate. Okay. How many electrons are present in hydrogen carbonate anion? Let's look at this one. 8CO3 has a -1 charge. So आप उनके प्रोटॉन्स को देखो और उसके बाद प्रोटॉन्स माइनस चार्ज. टोटल प्रोटॉन्स कैलकुलेट करो, प्रोटॉन्स माइनस चार्ज. 1 फॉर हाइड्रोजन, 6 फॉर कार्बन, 3 times 8 फॉर ऑक्सीजन माइनस द चार्ज. रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटॉन्स माइनस चार्ज. सो 7 + 24 30 क्या हो गया? 31. 31 + 1 32. सी इज द आंसर. ठीक है. अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो लेट मी, I find it hard to trust myself. 3 times 8 for oxygen plus 1 plus 6 plus 1. Yeah, 32 is the answer for this one. So there you go. Here you go. A sample of element X is analyzed using mass spectrometry. Mass spectrum is obtained. ठीक है. What is the relative atomic mass? Again, मैंने आपको बताया कैसे करते हो आप? Multiplied, add. These do multiplied, add. So 3 times 112 plus 56 times 114 plus 41 times 115 divided by 100. Just put it in a calculator and you will see this. Yashveen, which question are you talking about? Can you tell me the number? I'll explain it again. So once you do that, you will get the answer. Oxygen has 3 stable isotopes. 16, 17, 18. Okay. All 3 isotopes are present in a sample of oxygen gas. So इसका मतलब है कि कोई atom individually नहीं है. It's oxygen molecule, which was analyzed using a mass spectrometer. अब आप अंदाज़ा लगाओ. मैंने आपको बताया mass spectrometer always forms positive ions. So अगर atom है ही नहीं तो किसके positive ions बनाएगा? Molecule के positive ions. तो O2 के positive ions होंगे. So अब हमारे पास O2 में कितने masses आ सकते हैं? That is the question. अब इसको करने के लिए आई एम गोइंग टू टीच यू अ मेथड जो नॉर्मली एड मैथ्स में हम पढ़ाते हैं. वो मेथड है, उसको मैं कहता हूँ स्लॉट मेथड. ठीक है. यू कैन गिव इट योर ओन नेम. आप उसको पिजन होल बोल दो, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी उसका नाम बोलो. ठीक है. बॉक्स मेथड बोल दो, आपकी मर्जी है. ओके. O2 है
तो इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन है मेरे पास। अब आपने ऑप्शंस देखनी है और फिर सोचना है कि मैसेस कितने आ सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं दोनों 16 के ले लूँ, दोनों ऑक्सीजन 16। एक ऑप्शन है पहला 16 हो दूसरा 17 हो, एक ऑप्शन है पहला 16 हो दूसरा 18 हो। दीज आर द 3 ऑप्शंस, राइट। देन एक ऑप्शन है कि मैं पहला 17 ले लूँ दूसरा 16 ले लूँ, लेकिन ये ऑप्शन तो पहले हो चुकी है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। दिस ऑप्शन इज रिपीटेड, आई विल इग्नोर दैट। दूसरी ऑप्शन है 17 17 17 18, दीज आर द सेकंड ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन इज कि मैं 18 और 18 वाला ले लूँ। मेरे पास यही ऑप्शन बनती है ना रिपीट किए बगैर। सो दिस गिव्स मी 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बट टोटल मैथ देखना ज़रा। इसका मैथ है 32, इसका मैथ 1 बढ़ेगा तो 33, 2 बढ़ेगा तो 34, इसका मैथ भी 34 है, इसका मैथ उससे 1 बढ़ा है तो 35 है, और इसका मैथ उससे 1 बढ़ा है तो 36 है। डू यू सी कि ये और ये दोनों एक ही मैथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है एक ही पीक पे आएंगे। So peak depends on the mass to charge ratio. So what are we looking for? We are looking for slots with different masses. ठीक है, so अब देखो ये 32, 33, 34, 35, 36, 5 different peaks are what we will get, and that is what we have. क्योंकि mass to charge ratio के ऊपर डिपेंड करता है कि पीक कहाँ पे आएगी, एंड पीक आएगी किसकी? O2 की, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स तो है नहीं। Okay, this week I will be doing all the syllabus. I have divided AS syllabus in 27 topics and A2 syllabus in मैंने देखा था कितने topics थे A2 के, मुझे याद नहीं है, I'm sorry याद नहीं है, देख लूँगा, but A2 के topics को भी मैंने divide किया था, तो हम उनको उसी तरह से one by one solve कर लेंगे, don't worry about it. Ayan is asking about O levels chemistry. Ayan, this session today जो पहले 40 मिनट हैं, you should watch it for O levels. O levels में और A levels में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं A levels के, कॉन्सेप्ट सेम है, तो वॉच दैट। आई विल बी डूइंग टॉपिकल एग्जाम्स फॉर O levels एज वेल, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। आई कैन नॉट कमिट टू एग्जैक्ट टाइम, लेकिन आई विल बी डूइंग them. Okay, so does everyone understand this question? The question was asking how many different peaks you will get. So peaks depend on different masses, and different masses depend on uske combinations क्या हैं. So 34, 35, 36 इस तरह से हमारे पास different combinations हैं. Okay, element sulfur produces a mass spectrum with the following peaks. उसने बता दिया हमें peaks, ठीक है. Which relative atomic masses of sulfur can be calculated? अच्छा, अब देखो, what are these peaks telling us? It's telling us कि 4 different isotopes हैं. अब उनका मैस क्या है? डिपेंड्स ऑन द m/e वैल्यू. अगर e का वैल्यू +1 है ना, तो ये उनके मैसेज हैं, लेकिन अगर e का वैल्यू 2 है तो इसका डबल उनके मैसेज हैं, e का वैल्यू 3 है तो इसके ट्रिपल उनके मैसेज हैं. यहाँ पे मैस टू चार्ज रेशियो मैंने आपको बताया एस और ए लेवल्स में हमेशा वो 1 रहता है, e की वैल्यू 1 लेता है. दैट मीन्स मैस जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना, मैस टू चार्ज रेशियो, दैट इज द मैस. और अबंडेंस आपके पास ये आ गई, जस्ट मल्टीप्लाई द पेयर्स एंड देन ऐड देयर ऑल टुगेदर, and that is what your answer will be. और ये परसेंटेज है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप 100 से डिवाइड करें, बिकॉज टोटल वेट से डिवाइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है. सो या यू विल कैलकुलेट इट, यू विल गेट अ वैल्यू, मुश्किल नहीं होना चाहिए. ओके, अगेन दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन. जस्ट बाय लुकिंग एट इट वी कैन सी कि इस साइड पे 2 आइसोटोप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और ये एक बहुत छोटा सा आइसोटोप है, तो ज़्यादा वैल्यू इधर को पुल होगी, इट विल पुल द वैल्यू टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो इस वजह से हमें यहाँ पे वैल्यू लगेगी. दूसरी बात, हाउ डू वी कैलकुलेट इट? वेट टाइम्स परसेंटेज टाइम्स द वेट, या मैस टाइम्स द परसेंटेज, जो भी आप उसको बोलना चाहें. दिस टाइम्स दिस प्लस दिस टाइम्स दिस प्लस दिस टाइम्स दिस. सो व्हेन यू डू ऑल ऑफ दैट एंड देन यू डिवाइड बाय द परसेंटेज अबंडेंस, रिमेंबर आपने वेट से डिवाइड करना है, सो दैट इज व्हाट वी गेट. सो यू डोंट हैव टू गेट अ वैल्यू, जस्ट लुक एट द डिफरेंट आइसोटोप्स. अच्छा, उसने आपके लिए आसानी क्या की है, उसने 3 पीक्स दिए हैं और उसने कहा कि मैं तीनों को ही कैलकुलेट करूंगा. अच्छा, अब यहां पे सवाल सोचने वाला क्या है, क्या आप तीनों को करोगे या नहीं करोगे, ये सवाल है. अब ओवरऑल सैंपल का एवरेज तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा सिर्फ कॉपर का, उसने ओवरऑल का पूछा ही नहीं है. उसमें तो इम्प्योरिटी है गोल्ड की, तो आपने गोल्ड को इग्नोर करना है. दिस पीक विल बी इग्नोर्ड. तो इन दोनों में बस आपने देखना है, और
percentage times the mass or divided by total percentage. So we will get, I think A is the answer. Yeah, A is the answer for this. Let me confirm. Oh wait, no, A is not the answer, my bad. क्योंकि उसने 3 वैल्यू से डिवाइड कर दिया, हमने 2 से डिवाइड करना है. C is the answer. और करना जरूरी होता है. Okay, what number of protons, neutrons and electrons are present in this? Again, protons will always be the same, 26. Periodic table से पता चलेगा. Electrons are protons minus charge. So 26 minus 3, 23. And neutrons are mass minus protons, so 54 minus 26. There you go, 54 minus 26. Okay, which statement is correct? Chlorine has a relative atomic isotopic mass of 35.5. Isotope का mass half नहीं हो सकता. Quantum entanglement restricts that. Cl2 has a relative molecular mass of 70. नहीं, because chlorine का relative atomic mass होता है, atomic mass होता है 35.5. तो 2 हैं तो 71 होगा. ICl has a relative molecular mass of 162.4. So इसके लिए we will look in the periodic table. क्या अच्छा जी, periodic table में I का है 126.9 and 126.9 plus 35.5, that is 162.4, and this is relative molecular mass, and that is true. The relative molecular mass will be this. NaCl has a relative molecular mass. No, this term is wrong. Even though the value is correct, the term is wrong. ठीक है, it should be relative formula mass because it is empirical formula. Giant structure है, giant structure का हमेशा empirical formula होता है और उसका formula mass होता है. A single nucleus can be produced when a single this joins with particle X. Okay, so हमें phosphorus मिल रहा है by reacting sulfur with particle X. In the process, a proton is emitted. So proton will be emitted, plus 1 charge है उसके ऊपर. Phosphorus 32 है, ये 32 है, X का हमें नहीं पता, और ये 16 है, और ये 15 है. ठीक है, फॉलो कर रहे हैं आप? Okay, what is particle X? Let's see. अब देखो, total mass should be the same, total proton number should be the same. Total proton number है 16, तो इसका proton number होगा 0. क्यों? क्योंकि right side पे 15 plus 1 16 तो automatically हो गया. And total mass 32 plus something should equal 32 plus 1, 33. तो इसका mass 1 है. So कौन सा particle है जिसका mass 1 है लेकिन उसका proton 0 है? तो वो neutron है. C is the answer. The table shows the number of protons, neutrons and electrons in 4 different particles. Okay, which pair represents the atoms of 2 isotopes of same element? Again, isotopes हैं, proton number same होगा. Proton number same होने का मतलब है ये तीनों हो सकते हैं, Z reject करते हैं. अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि atoms, which means electrons and protons should be same. Atoms are not charged, उनके neutral होते हैं वो. So ये हो सकता है और ये हो सकता है, and that is your answer. Third confirm करने के लिए कि isotope में neutron different होना चाहिए, तो yeah, that is the case. वो different है. So W and Y, that is the pair. Which atom has the same number of electrons as an ammonium ion? So ammonium ion के electrons को देखते हैं. NH4 plus 1 proton minus charge. Electrons यहाँ से पता चलेंगे. So nitrogen के proton है 7, hydrogen के proton है 1, 1 times 4, 4 minus 1, so 10 हो गया. तो 10 protons आप देखो examiner किस में होते हैं? 10 neon में होते हैं. That's it. That's your answer. And that brings us to the end of this worksheet. See, इतना मुश्किल नहीं था. ये चैप्टर वैसे ही आसान है, and you just have to pay attention to the way they basically design the questions. Okay, let's look at some theory questions, and yeah. Complete the table to show the composition and identity of some atoms and ions. Let's see. Protons इसके 3 होंगे क्योंकि atomic number भी 3 है. Neutrons 3 होंगे, 6 minus 3. Remember, protons is the atomic number, neutrons is the mass minus that, and electrons are proton minus charge. So charge इसके ऊपर plus 1 है, 3 minus 1, 2 electrons है इसमें.
ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. ओके तो चार्ज होगा 8. अच्छा अब चार्ज क्या होगा 8 माइनस 10 माइनस 2 क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द चार्ज. सेम इक्वेशन प्रोटॉन माइनस चार्ज की बजाय आप उसको उस तरह से कर लो. एंड न्यूक्लियन नंबर विल बी द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच इज 17. यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये कि स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल से जो वैल्यू मिलेगी ना वही डाल देते हैं. एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू डू दिस बिकॉज ये आइसोटोप उसने आपको दिया हुआ है. दिस इज अ डिफरेंट आइसोटोप सो यू शुड यूज दिस वैल्यू. Next one, we have protons 26, which tells us that this is iron. And number of electrons is 2 less, so plus 2 charge होगा. Protons minus charge, या फिर आप protons minus electrons से charge पता कर लो. And neutrons हमें 54 minus 26 करने से मिल जाएंगे, which I think is 28. Let me confirm. Yes, 28. लास्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है तो इससे पता चल गया एटॉमिक नंबर भी वही होगा और ये क्लोरीन है. अगेन पीरियोडिक टेबल विल हेल्प. एंड न्यूट्रॉन्स आर 18. 17 प्लस 18 35. एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज 0 सो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने हैं. इट्स अ न्यूट्रल थिंग. ओके सो दैट विल गिव अस द आंसर टू दिस. ऑलराइट एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क. Beams of protons, neutrons and electrons behave differently in electric field. Of course, they have different charges. The diagram shows the path of beams of electron. Add a label line to represent the path of beams of protons and neutrons in the same field. So, इससे हमें पता क्या चल रहा है. Electrons इधर को जा रहे हैं, that means this side is positive and this side is negative. अब जरा neutrons will go straight. So, you should write the whole word, neutron. And protons will bend. But एक चीज़ का ध्यान में रखना. प्रोटॉन शुड बेंड लेस देन इलेक्ट्रॉन. सो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से बेंड कर रहा है तो प्रोटॉन तो बहुत स्लोली बेंड करेगा. ठीक है बिकॉज प्रोटॉन इज मच हैवियर. एंड देयर यू गो. हो गया. A sample of strontium exists as a mixture of 4 isotopes. Okay, information about 3 of these isotopes is given in the table. Calculate the abundance of 4th isotope. Okay, so again हमें कोई isotope उसने दिया है, हमें उसकी वैल्यू भी नहीं पता है और हमें उसकी अबंडेंस भी नहीं पता है. सो अबंडेंस तो बहुत आसान है. 100 में से बाकी सबको माइनस कर दें एंड यू विल गेट द वैल्यू. सो 100 माइनस 82.58 minus 7 minus 9.86, that is 0.56%. That's the third one, fourth one. And we don't know the value, it is x. आगे वो कह रहे थे relative atomic mass is 87.71. ठीक है. So relative atomic mass दे दिया, which means if I multiply this, add it all together, I will get this. ठीक है, that's the method. That's the weighted average thing. So I'll do that. 87.71 equals 86 into 9.86 plus 87 into 7 plus 88 into 82.58 plus x into 0.56. Divide it all by 100 and we'll get the value. ठीक है, you do the calculation, just make sure your calculations are correct, उसमें गलती मत कीजिएगा. And once you do that, you will get the value equal to 84. It's important to show this whole fraction in the exam because ये पूरा 1 mark है इसका. And this is the correct answer is the 1 mark. इसकी working के कोई marks नहीं है. So just make sure कि आप working गलत नहीं करें. You can use your calculators and all that, but do show how you did it by showing this fraction. Okay. A sample of oxygen exists as a mixture of 3 isotopes. Okay. Calculate the abundance of the third isotope. Same method. हम इसको 100 से minus करेंगे. So 100 minus 99.76 minus 0.04. So हमें 0.2 आती है. Let me confirm. Yeah, 0.2 आती है. So that's the percentage. Relative atomic mass is this. Find the third isotope. So इसकी percentage है 0.2 but mass उसका हमें नहीं पता. So we'll just multiply them. 16 into 99.76 plus 17 into 0.04 plus 0.2x over 100 because 100% total weight है equals to 16.0044. You solve this, you will get I think 18 आएगा आंसर क्योंकि इसका हमने पहले एक एग्जाम्पल में 18 देखा था. So that is how you do this. So you see कि आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं. या आपको आइसोटोप दे देता है
एंड दे आस्क यू कि अच्छा इसकी वैल्यू निकाल के दें, या वो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने का कहता है और फिर उसको आपको अज्यूम करना पड़ता है कि वो क्या है उसकी वैल्यू, एंड रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू देकर वो आपसे पूछता है. These are the patterns that you will see in the exam. सारे के सारे इसी तरह के पैटर्न आएंगे. Let's look at this question. Same, you see, absolutely same. But इसमें उसने क्या किया कि उसमें उसने आपको कहा है कि दोनों खुद ही कैलकुलेट करो. तो आपने खुद सोचना है कि अच्छा ये परसेंटेज है तो टोटल 100 होगी तो ये कितनी होगी, और फिर उसको आप 140 को मल्टीप्लाई करके वहाँ से देख सकते हैं. So this is how this is done. All the questions follow the same pattern. ठीक है, definitions होंगी, tables fill करने होंगे, and third वो आपसे relative atomic mass की calculations करेगा. ठीक है, so I'm gonna move forward with this. If you have any, I will share this worksheet, and if you have any specific question कि ये वाला question नहीं हो रहा तो I'll be happy to help. But you see the pattern is still the same. So I would suggest कि आप इस questions को करो अगर आपको कोई challenge आ रहा है. बट डू इनफ क्वेश्चन कि आपको आ जाए. अगर सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, जस्ट डू इनफ कि आपको ये आ जाए. लेट्स सी, ये पैटर्न भी वही है. ये उसने एक नई चीज़ पूछी है कि व्हाट इज द लोकेशन विद इन एटम. सो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन विद इन एटम है शेल, और न्यूट्रॉन की लोकेशन विद इन एटम है न्यूक्लियस. सो ये एक चीज़ है. दूसरा वो आपसे पूछता है डिफाइन आइसोटोप. आइसोटोप को डिफाइन करने की 2 मार्क्स की डेफिनेशन है. सो इसमें पहला मार्क है कि आपने बताना है कि वो सेम क्या है, सेम प्रोटॉन नंबर है या सेम एटॉमिक नंबर. दोनों आप एक इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. एंड देन इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो यू विल से दैट आइसोटोप्स आर एटम्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different number of neutrons, and that's how you get the 2 marks. If you don't want to use the word protons and neutrons for whatever reason, you can still use the word atomic number and mass number. वो कह रहे हैं कि a different sample of gold contains more than one isotope. Suggest why this different sample has the same chemical properties. Again, remember, chemical properties depend on valence electrons, not on protons, not on neutrons, not on any electron. Valence electrons. So we'll say that they have same number of valence electrons. If you don't want to mention valence electrons, you can also say same electronic configuration, and that will give you the same answer. Okay, same number of electrons. Then for O levels, इसी वीडियो की first 40 minutes देख लें, because the concept is explained there. But yeah, I will do the questions for O levels later, or IGCSE as well. Again, we have seen mass spectrum कैसे follow करते हैं and how we work with this. Just make sure you only work with the relevant part. So अब जैसे उसने यहाँ पे हमें कॉपर की वैल्यूज दी हुई हैं और गोल्ड के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है. So we will only work with that. So abundance, obviously percentage, अगर ये कॉपर की परसेंटेज है तो ये गोल्ड की परसेंटेज होगी. So we'll still subtract it from 56.36 minus 25.14. Whatever we get, we will get that as a percentage of gold. But अब वो कह रहे हैं कि find the AR of copper. So then you ignore this because you only have to work with copper. And then you divide by these two. Don't divide by 100 because total 100 है ही नहीं. There is gold in there. There is an impurity. So 100 से divide नहीं करना है. You divide by the sum of these two. And that's very important. Okay? Alright. State fully in terms of numbers of subatomic particles what these 3 atoms have in common. So आप देखेंगे कि अच्छा इसमें प्रोटॉन्स किस में सेम है, न्यूट्रॉन्स किस में सेम है, वो सारा आप देखोगे. अब इसमें सेम क्या है, दे ऑल हैव 40 एज द मास. सो हमें सबएटॉमिक पार्टिकल्स हम ये कहेंगे ना कि दे हैव 40 मास, दैट मे नॉट बी करेक्ट. एग्जामिनर पे डिपेंड करता है. मार्क्स स्कीम में उसने अगर लिखा हुआ है कि सेम न्यूक्लियर नंबर तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा. But the better way to answer this would be, because they have clearly asked for subatomic particles, we can say they have same number or same number of protons and neutrons. I would suggest that you write this. I'm not saying कि nuclear number गलत होगा. I'm just saying कि ये बेहतर answer है. So
marks के लिए nuclear number will be fine, but this added together or sum of all of them or total protons and neutrons, ये बताना ज़रूरी है कि you are adding them together. State fully in terms of all subatomic particles how these three atoms differ. So first of all, their proton numbers is different, right? So they have different number of protons, but don't stop just here. अगर protons different हैं but total same आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि neutrons भी different होंगे. And then because protons different हैं तो electrons भी different होंगे. And that is why examiner used the word fully. So don't just stop on the very first thing that you see. सोचें उस क्वेश्चन के बारे में. Okay? This we have seen, so I'm going to skip it. This we have also seen. वो पूछ रहा है कि दो isotopes में difference क्या है? Different number of neutrons. That's the difference. State what further information is needed to calculate relative atomic mass. So आपको अगर मैं सिर्फ mass दे दूँ, आप AR निकाल सकते हो? नहीं. Because you need percentage. You need relative abundance. So that's a term you should know. Now in IGCSE you did not need to memorize this term, but now you do. Okay, use the word relative abundance or percentage abundance. Both of them are acceptable. Again, something that we have seen, relative atomic mass की definition. As I said before, best definitions are the ones you get from your syllabus. Syllabus को read करें, you'll find the definitions there. उनको लिखें side पे. उनको आपने याद करना है. Try to use those words because they score marks. ठीक है? So for this one, examiner uses the word weighted average या mean value या मतलब weighted mass. ठीक है? So weighted average of mass of all isotopes या all naturally occurring isotopes compared या relative to 1/12 of carbon 12. Okay, so the 1/12 of carbon 12 is basically our standard. One thing that I would like to point out here, some students define mole as 12 grams of carbon 12. Remember, if you're doing that, you're living in 2019. So while वो COVID से पहला ज़माना था और वो बड़ा अच्छा था उस लिहाज से, the definition has changed. 2019 के जून में they changed the definition. It's no longer 12 grams of carbon 12. It is a mole is amount of matter containing Avogadro's number of particles, 6.02 into 10 power 23 particles. Okay, in fact better way is to just say Avogadro's number of particles. Do not use the 12 grams of carbon 12 anymore, please don't. Okay, relative mass हमने calculate करना सीखा है, हमें आता है. Same thing here, same thing here. Molecular mass है तो इसमें you just have to basically differentiate के molecular mass में और nuclear atomic mass में फ़र्क क्या है. So atomic mass में हमने कहा था it was the average mass of all isotopes of an element compared with carbon 12. यहाँ पे हम mass of molecule compared with carbon 12 करेंगे. ठीक है, that is the thing. अभी ये भी 2 marks हैं और इसमें first mark will be average mass of a molecule होगा या weighted average mass of a molecule होगा और second mark will be for comparison with carbon 12 relative to carbon 12. ठीक है, so that is important. And that brings us to the third worksheet. I need to take a break here. I'll be back in 2 minutes. All right, let's assume, sorry, यहाँ पे it's -3 here, so yeah. Okay, let's get started with this one. In the radioactive decay of an isotope of lead to an isotope of bismuth, a particle dash is emitted. Again, you have to know that कोई भी particle है वो emit होता है, nuclear reaction होता है. The mass and the proton number has to stay the same before the reaction, after the reaction. It doesn't matter कि वो क्या हो रहा है. They both have to stay the same. So let's see. We have lead, radioactive decay of an isotope of lead. Okay, so lead है और वो bismuth बना रहा है and x-10 बना रहा है. अब -1 का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, and there you go. We don't need anything else. So this is the answer.
The diagram shows the mass spectrum of a sample of naturally occurring copper. What is the relative atomic mass? We have done this many times, but थोड़ा सा इसमें वो difference है कि relative abundance की values change हो गई हैं. So we'll simply do 63 times 7 plus 65 times 3 divided by 10 because we have to divide by the total weight. Okay, so when you do that, you will get 63.6 and that is your answer. अब अगर किसी ने रट्टा लगाया है 63.5 का कि वो क्लास में तो 63.5 था, तो unfortunately that will be wrong. Which isotope of an element in the third period of periodic table contains the same number of neutrons as this? So again वो कह रहा है कि same number of neutron है, तो हमें neutrons 32 minus 16 neutrons चाहिए. So just see किस में 16 neutrons हैं. That is this one. It still has 16 neutrons. Different element, but 16 neutrons. Okay. Okay, I don't know how to pronounce this name, but it's an artificial element. One of the isotopes is this. Which of the following statement is correct? Okay, so first of all, the nucleon number is 262, so this is wrong. This is an isotope of this one. Let's see. The proton number is same, but mass number is different. Yep, that is correct. ये बात ठीक है. Zinc using the data to calculate relative atomic mass. Again, not really a problem. The weight of this is 40. This one is 30. This one, I will have to take 30 again. Okay, so 67 times 30 plus 66 times 30 plus 64 times 40 divided by 100 because total 100% है. So I can expect it to be closer to the 30 वाली side because वहाँ पे ज़्यादा है वो. So I am getting a value of 65.5. Okay, so that's the value that I am getting. So I'll just stick with that. It is now thought that where an element exists has several isotopes, the stable ones usually contain a magic number of neutrons. Okay, one of those magic numbers is 126. So वो कह रहे हैं कि 126 होंगे तो stable हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा. So let's see. We have to look at the periodic table to figure out the protons. So let's see. Periodic table में bismuth is 83. So just subtract them and see if you get 126. I think you do. Lead is 82. This is also 126. Polonium in the periodic table. Where is polonium? I can't find it for some reason. Yeah, 84. So that also seems 126. And tellurium, I think TL. This is TL, right? Yeah, TL. Again, I'll have to look for it. लग तो यही रहा है कि यही आंसर होगा. I can't find it. No, this is not tellurium. This is, I guess, thallium. Yeah, it is thallium. So this is 181. So yeah, this is the one that does not have magic numbers. So it will be wrong. In which species are the number of electrons and neutrons equal? So neutrons क्या होते हैं? Mass minus protons. And electrons क्या होते हैं? Proton minus charge. So this is 5 and 4. Wrong. 10 and 9. Wrong. 12 and 11 minus 1. 10. No, wrong. 10 and 8 minus 2. 10. This is the answer. Which ion has more electrons than protons? Just looking at this, we know it will be a negative ion. And more proton than neutron. Okay, more proton than neutron. दुनिया में एक ही एलिमेंट है जिसमें more proton than neutron होता है, वो है हाइड्रोजन. Because हाइड्रोजन में there is this isotope which has 1 proton, 0 neutron. बाकी सब में हमारे पास more proton than neutron हो सकते हैं, but हमें हाइड्रोजन का तो कंफर्म है कि हमेशा हो सकता है. So let's see. तो इसका मतलब है जिसमें हाइड्रोजन होगा उसमें इसका चांस होने का, ट्रू होने का चांस है, और ये नेगेटिव होगा. So हाइड्रोजन और नेगेटिव, डी. There you go. अब आप ये कर सकते थे कि आप हर एक को कैलकुलेट करते, but that will take you really long. So we need to work with these shortcuts. A sample of chlorine contains isotopes of this. How many peaks
corresponding to Cl2. Again, we can use the slot method. 35, 37 एक होगा, and 35, 35 एक होगा, or 37, 37 एक होगा. So they all give you different numbers, right? So this is 72, 70, 71, no, 74. So 3 different peaks. B. I don't think there's any combination possible. So yeah, 3 different peaks. A radioactive isotope of thallium is used to assess damage in heart muscles after a heart attack. Which statement about this is correct? So nucleon number is ka 201 hai, so this is wrong. Number of electrons in one atom is 81. Yep, that is correct because proton number and electrons are the same. Again, this is something we have seen. We'll multiply 10 with 1 and 11 with 4 and divide by 5. The important bit is that you're dividing by the total weight. So this has a weight of 1, this has a weight of 4. You divide by the total weight, whatever that answer is. Dalton's atomic theory, published in 1808, contained 4 predictions about atoms. Which of his predictions is still considered to be correct? Okay, atoms are very small in size. ये मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है. We know that that is true. ठीक है, ये बात ठीक है. No atom can be split into. This is wrong. We have done this plenty of times. All of the atoms of a particular element have the same mass. No, isotopes. All of the atoms of one element are different in mass from all the atoms of other element. No, calcium and argon, दोनों का mass 40 है, ठीक है? And there's plenty of others, so not necessarily. The diagram shows the possible paths of subatomic particles moving in an electric field in a vacuum. Okay, electrons जा रहे हैं, neutrons. ये कैसे हो सकता है? Protons cannot attract towards the positive side. Impossible. So ये नहीं हो सकता. 1 and 2 is correct. Skin cancer can be treated using a radioactive isotope. So phosphorus, a compound containing the phosphide ion, wrapped in plastic sheet, is strapped to the affected area. What is the composition of phosphide ion? अब ये सारी story का इस question से कोई ताल्लुक नहीं. Sure, interesting story, but कोई हमारे से ताल्लुक नहीं है इन question में. We know this is proton number. You subtract them, that's a neutron number, 17, and 15 minus 3, 18 as your electrons. So A. Hard water contains calcium ions and hydrogen carbonate ions arising from dissolved calcium hydrogen carbonate. Okay, how many electrons are present in hydrogen carbonate anion? We have done this before. अभी हमने किया था. All we needed to do was protons minus charge. So in that ion, look for individual protons. So hydrogen का 1 है, carbon का 6 है, oxygen के 8 है, and there's 8 times 3 for oxygen क्योंकि 3 है oxygen है. So you add them all together, minus 1, because hydrogen carbonate has a negative 1 charge, and because of that, whatever answer we'll get, you just do the math. Again, this is nothing new for us. Helium is the second element. It's an isotope. Okay, what is the same in an atom of helium-4 and an atom of H3? Let's see. Helium-4 means 2 proton numbers, so 2 neutrons. Hydrogen-3 means 3 minus 1, 2 neutrons. So they both have same number of neutrons. In which species are number of proton, neutrons and electrons all different? Okay. 5, 6, 5. क्योंकि न्यूट्रल है. न्यूट्रल होगा तो कभी भी इक्वल होंगे ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. तो इसको आप वैसे ही रिजेक्ट कर दें. अच्छा, अब बाकियों को देखते हैं. 9 protons, 10 electrons, 10 neutrons but 10 electrons. So ये गलत है. 11 protons, 12 neutrons, 10 electrons. This is correct. How am I doing it? Proton number is the smaller number. Neutrons are mass minus protons, and charge is electron is proton minus charge. Again, same thing. Okay, let's look at this one. The most common ion molecule reaction in gas clouds of universe is as shown. Okay, so hydrogen is combining with hydrogen ions to make hydrogen molecule and hydrogen atom. What could be the composition of H3 plus ion? So again, what has to stay the same? Mass and proton number. That has to stay the same. So proton number is same. We have 1 proton here, 3 protons here. So H3 में 3 प्रोटॉन होंगे. अच्छा, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब है जितने न्यूट्रॉन हैं वो इसी में जाने हैं. तो न्यूट्रॉन तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सो ये 0 होगा.
electrons. This has 3 proton, 3 minus 1, 2 electrons. Proton minus charge. Remember that. Isoelectronic. That's a new term. You don't need to memorize it, but it simply means same number of electrons. Which ion is not isoelectronic with K plus? अच्छा, अब K plus के electrons क्या हैं? Proton minus charge. 19 minus 1, 18. Another way to do this is periodic table में आप जाओ. +1 है तो move back. Potassium से +1 move back. कहाँ पे आओगे आप? You land on argon. उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अगर -1 होता तो you move 1 step forward. तो पोटेशियम से 1 step forward कैल्शियम, उसमें 20 प्रोटॉन है, तो आपके पास उस आयन में 20 इलेक्ट्रॉन है. सो अगर सल्फर है, मैं कहता हूँ -2 है, तो मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड, जहाँ पे आप लैंड करोगे उतने इलेक्ट्रॉन है. और अगर आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो तो जस्ट गो बैकवर्ड, जहाँ लैंड करोगे उतने इलेक्ट्रॉन है. सो दैट्स एन ईजी वे टू यूज पीरियोडिक टेबल टू फिगर इट आउट फॉर आयंस. In which option do all 3 particles have the same electronic configuration and the same number of neutrons? So electronic configuration same होने का मतलब है कि number of electrons same है. So nitride, oxide, fluoride all land on neon. So electrons तो सबके same है, but same number of neutrons. Let's see. 15 minus 7 is 8. 16 minus 8 is 8. 19 minus 9 is 10. So that is not the answer. ठीक है. इसमें देखते हैं. 18 minus 8 is 10. 19 minus 9 is 10. 20 minus 10 is 10. And yes, they are all isoelectronic. They have the same number of electrons. So that is the answer. And that brings us to the end of this worksheet. The remaining questions in the next worksheet, they're also repetition of what we have seen before. Okay, there's nothing new here. All the concept, all the kind of questions the examiner पूछता है, you've seen them, and you will see that there is a pattern. One thing that they will be asking you that is new is about ionization energy, and we will deal with ionization energy later on. Right now, I will combine it with the atomic structure chapter that we have, but as far as the rest of it is concerned, we're good to go. So I hope this session was useful to you, and I look forward to seeing you again. And yeah, good luck. Bye.